watching English with English. Learn to become excellent speaker with world number one teacher. Hello, you are watching English with English here, and here we are knowing the secret of learning English. You are not going coaching, neither you are going to school, not hiring any kind of teacher, but instead of those things, if you want to speak English at your home, being farmer, being poor, and actually you have a cell phone, mobile phone, where you are running a lot, you are expending a lot of time, but you don't know what the secret to learn this language. So on my YouTube channel, I am sharing the things one and one. As a farmer, I have been doing, and you should also do. I will request you, that is great strategy where you can know this language, you can talk to people, and you can communicate people. Okay, so you must know this secret. I am telling one and one in short video, and you should know the best way of learning the language by mobile phone. You know what you have to do. क्या करना है आपको इंग्लिश सीखते हो, आप अपनी मोबाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे इंग्लिश लर्न कर सकते हो. बाय दिस टेक्निक you can do too much easily. Okay, first of all, you have to go on Play Store, and there you have to write thousands usable sentences, 100 spoken sentences, and 5,000 spoken sentences. You have to write, you have to search. There you will get a lot of sentences apps. Okay, you have to download spoken sentences apps where is a lot of sentence and phrases. जाएंगे यूट्यूब पे आप, वहाँ पे लिखेंगे 1000 स्पोकन वर्ड, 2000 स्पोकन वर्ड, 10,000 स्पोकन वर्ड. आप वहाँ पा जाओगे और उसको डाउनलोड कर लेना है. अगेन यू हैव टू डू व्हाट डू यू नो, you have to read. Okay, that's the sentences loudly, like that I am going to market, I am coming from market, and my mother is coming towards me. ऐसे सेंटेंसों को आपको पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ. दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आप उसमें पाएंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली आई वांट टू टेल यू हियर वन मोर थिंग. इफ़ यू हैव वाइट बोर्ड लाइक स्कूल और कोचिंग बोर्ड, स्कूल की तरह एक वाइट बोर्ड या कोचिंग की तरह वाइट बोर्ड है आपके पास, या फिर कॉपी है आपके पास, वाइट पेज एंड पेन. सो व्हाट विल यू हैव टू डू विद बोर्ड एंड वाइट पेजेस? जस्ट open your mobile. You are the beginner, so open your mobile and go close to board, take a marker and write sentences like the Prime Minister of India is the great person in the world. This kind of sentence you have found, and you have to write. And again you have to read loudly. The Prime Minister of India is going to Switzerland. This Prime Minister is India is doing something special in our country. You have to रीड लाउडली. आपको तेज़ी से सेंटेंस पढ़ना है बोर्ड पर लिख के, और देख के मोबाइल से पढ़ना, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहाँ पे मेन वर्ब लगता है, कहाँ पे एडजेक्टिव लगता है, कहाँ पे नाउन लगता है, कहाँ प्रोनाउन लगता है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू फॉर यू. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू सी. After watching, you have to write and speak loudly. Do 1 to 2 months, 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीना करो. देखो, you will get a lot of good thing. इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप पाओगे. As much as you will get positivity, where you will feel I can speak this word with somebody else. Really आप encouragement पाओगे to speak करने के लिए. बट इसको आप कंटिन्यूसली रोज डेली करना है, 30 to 35 sentences every single day. And if it is possible, so 50 sentences, small sentences, spoken sentences you have to write. Don't go for studying vocabulary, don't go for studying grammar. Just do these things for many days, and you will get amazing thing आप पाओगे. Especially one more thing, जब आप लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, बार बार करो. Once write, read, and again in the evening when you are going to erase, you have to read. Okay, and most importantly,
जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप कहीं जाते हो, कुछ करते हो, तो आपको करना क्या है, उस सेंटेंस को मेमोराइज़ करो अपने दिमाग में। सोचो, यू हैव टू मेमोराइज योर सेंटेंसेस इन योर ब्रेन। व्हाट वाज दैट ऑन दैट बोर्ड, आई वाज स्टडिंग अलोन। क्या मैं अभी पढ़ रहा था, उसको मेमोराइज करो और अपने से बातें कर सकते हो। समटाइम यू कैन टॉक टू। एंड अगर आप इसको करते हो 1 to 2-3 मंथ, योर राइटिंग विल बी इम्प्रूव। राइटिंग इम्प्रूव होगी, सेंटेंस फ्रेमिंग भी इम्प्रूव होगी, और स्पोकन आपका माउथ भी ट्रेंड होगा, और सेंटेंस भी आपके ब्रेन में जाएंगे। एंड कुछ ही महीने में आप बेटर इंग्लिश बोल सकते हो, बेटर देन एनी वन इन द वर्ल्ड, एनी वन इन द वर्ल्ड। आई एम डैम श्योर टू दिस थिंग्स, too much effective it is today for a beginner, for advanced. Thank you so much. In next video I will tell you